So still working with the same paper, summer 23, paper 11. Here we go. Question number 14. Which expression for pressure is correct? हमें पता है कि pressure is defined as force acting per unit area. 14 का answer A. Obviously, or maybe not very obvious in my opinion, the easiest question of this paper. Question number 15. A ball has a mass of 0.5 kg and a volume of 1.3 into 10 to the negative 3. The ball is again in equilibrium on still water. Two forces that act on the ball are its weight and the upthrust due to the water. Weight हमेशा नीचे की तरफ होता है, upthrust हमेशा ऊपर की तरफ होता है. Density of water is this much. What is the percentage of the volume of the ball above the surface of the water? तो हमें पता है कि भाई weight और upthrust बराबर होंगे. Weight is mg, so 0.5 times 9.81 must equal the upthrust. याद रखा जाए कि upthrust में हमेशा you have the density of the liquid which is 1000. Again you have rho g delta v is the formula, that's 9.81, and then you have delta v. अगर याद करें lectures, why do we call it delta v? Because it's just the volume below the level of the liquid जिस पे upthrust act करता है. So if you find delta v using this, you can see 9.81s would obviously cancel out. So this would be 0.5 into 10 to the negative 3. Calculator में भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही नज़र आ रहा है. So what percentage is this of this volume? So 0.5 over 1.3. I can just eyeball it. So it's 0.5 into 10 to the negative 3. So 0.5 over 1.3 times 100. That would be 38%. That should be the answer, right? No. Because this asks for the volume above the water. याद रखें जो delta V निकाला है 0.5 into 10 to the negative 3, that's the volume below. So volume above कितना हो जाएगा? 100 minus 38%. So that would be 62%, which is the correct answer. जो लोगों को यहाँ पे समझ आ गई थी उन्होंने गलती इस वजह से की because they did not read the question properly. ये above का मांग रहा है. So that would be, या तो आप ये कर सकते हैं 1.3 minus 0.5. So basically जो आपका 0.8 over 1.3 times 100, that would give you this. Yeah, if this is the percentage below, then the rest must be the percentage above. Let's have a look at another question. Question number 16. A man sits on a buggy that is pulled along by a wire attached to a kite. The wire is at an angle of 40 degrees to the horizontal. Tension of 200 newtons in the wire. Man and the buggy travel a distance of 20 meters along a straight horizontal path. Wire and path of the buggy are in the same vertical plane. Work done by the tension force on the man and the buggy. So work done का क्या formula होता है? Force and displacement moved in the direction of the force. So यहाँ पर displacement is a horizontal 20 meters. So we must take also the horizontal component of the force. So 200 cos 40 times the 20 will give you what you want. So that's going to be 3.1 kilojoules correct to 2SF. Let's have a look at question 17. A ball is thrown vertically upwards from the surface of the earth. Which statement describes the energy of the ball as it rises through the air? अच्छा अक्सर अगर एग्जामिनर दी एयर कहता है या द एटमॉस्फेयर कहता है, ये बेसिकली आपको हिंट कराना चाह रहा है टुवर्ड्स द आइडिया कि एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे है. अब इसे इग्नोर ना करिएगा. सो अब इसको ऊपर फेंक रहे हैं, आपको पता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है ये बढ़ रही है और काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, राइट, बिकॉज इट्स गोइंग टू गो अप. तो आपको पता है कि हाइट बढ़ रही है, सो पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, बट बिकॉज ऑफ द डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये स्लो हो रहा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है. तो आगे ये कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल डिक्रीजेस एज जीपीई डिक्रीजेस. रॉन्ग. काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एज जीपीई इंक्रीजेस. दिस इज राइट. अगेन दिस वाज आल्सो अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, जीपीई डिक्रीजेस. गलत है. टोटल एनर्जी डज नॉट इंक्रीज, इट स्टेज कांस्टेंट बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अच्छा अब ये थोड़ा मज़ेदार सवाल आया है.
So let's get ourselves some space to work with this. A lamp is suspended in equilibrium again. तो equilibrium के लिए you have the two conditions, resultant force, resultant moment. ये दोनों ज़ीरो होने चाहिए. From a fixed support by 3 long identical wires. 3 वायर्स साथ साथ लगी हुई हैं to this lamp. ये आपको देखकर ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए that these are basically springs की तो वैसे हम बात करते हैं, these are in parallel. ठीक है, अब यहाँ springs नहीं कहूँगा because these are wires, लेकिन ये है एक parallel configuration. Weight of the lamp causes each wire to have an extension of 0.4 cm. ये भी आपको पता है कि भाई जब पैरेलल में लगे होते हैं तो सबकी एक्सटेंशन सेम होती है और यही टोटल एक्सटेंशन के भी बराबर होता है. हाइट एच ऑफ द लैम्प अबव द फ्लोर इज मेजर्ड. तो ये लैम्प कितना ऊपर है ज़मीन से, ये कोई हाइट है h. मिडल वायर सडनली ब्रेक्स and the lamp falls a small distance as the extensions of the remaining 2 wires increase. The wires obey Hooke's law. तो पहले क्या हो रहा था कि भाई ये जो वज़न था ये तीनों ने संभाला था, अब ये बाकी 2 पे आ गया जब बीच वाला टूट चुका है. सो नेचुरली इट एक्सटेंड्स स्लाइटली और फिर ये थोड़ा सा गिरता है एंड अगेन इट कम्स टू इक्विलिब्रियम. व्हेन द लैम्प इज इन इक्विलिब्रियम, हाइट ऑफ द लैम्प अबव द फ्लोर इज मेजर्ड अगेन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 वैल्यूज ऑफ एच? जाहिर सी बात है ये जितना गिरा है उनमें जो हाइट्स में फ़र्क है वो बेसिकली दैट्स इक्वल टू वट एवर दिस इंक्रीज इन एक्सटेंशन इज, है ना, यही है ये. अगर दिस इज अबव सम फ्लोर, लेट मी मेक अ डायग्राम हियर. दिस इज द लैम्प, दिस इज अबव सम फ्लोर. ये 3 तारें थी, जब एक तार टूट जाएगी तो ये जो नई पोजीशन पे आएगा वे यू हैव ओनली 2 वायर्स, तो उसमें क्या होगा, ये गिरा क्यों है, ये वाला टूटने की वजह से. सो बेसिकली जो इंक्रीज इन एक्सटेंशन है दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द 2 एचेस, ये वाला जो फासला है. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस इन द हाइट्स h. नाउ यू मस्ट रिमेंबर कि जब यू हैव फाइबर्स और स्प्रिंग्स इन पैरेलल तो आपके पास लोड स्प्लिट होता है. सो अगर इसका कोई वजन था w, तो आपको पता है ये w/3, w/3, w/3 इन तीनों में इक्वली स्प्लिट होता. लेकिन अब क्या हुआ है कि जब ये एक टूट चुका है तो अब यही वज़न 2 में स्प्लिट होगा. ठीक है, सो पहले सब पे था w/3, अब ये बन चुका है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बाई समथिंग, दिस इज नाउ टर्न्ड इनटू w/2. मल्टीप्लिकेशन बाई समथिंग क्यों कह रहा हूँ मैं, ये बेसिकली फैक्टर चेंज निकाल रहा हूँ ना कि भाई ये वेट कितने से बड़ा है. नाउ इट्स वेरी इजी टू सी, यू कैन प्रॉब्ली लुक एट द मैथ एंड गेस कि भाई यहाँ पे आपके पास एक होना चाहिए 2 और यहाँ पे आपके पास होना चाहिए 3. यस, दैट्स हाउ दिस बिकम्स w/2. सो यू नो कि भाई आपका जो लोड है दिस इज इंक्रीज्ड बाय 1.5. इफ यू रिमेंबर दिस इक्वेशन, Hooke's law, F equals kx. सो ये क्या कहता है, प्रोपोर्शनैलिटी बेसिकली. So if this becomes times 1.5, then the extension must also become times 1.5. ठीक है, पहले एक्सटेंशन कितनी थी 0.4 cm, अब कितनी हो चुकी है 0.4 टाइम्स 1.5, अब हो चुकी है 0.6 cm. सही है. सो नाउ इट्स अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन. तो ये पहले था, अब है 0.6 और पहले ये था कितना, this was 0.4. So the difference between the two will tell you delta H. So 0.6 minus 0.4, the final answer is going to be option A. Let's have a look at question number 19. Force extension graph for a spring is shown. What represents the work done to extend the spring? Force extension graph के नीचे वाला जो area होता है, this is something you expected to know. This is the work done. So it's A. इस चीज़ के बारे में खास ख्याल रखें that it's the area with the extension axis. So it's all of this area and not the other way around. ठीक है, अगर extension force होता तो आपके पास ये वाला एरिया हो जाता. इस चीज़ का ख्याल रखना आप.